Yes, the chapter second is work, power and energy. So first we are doing about this work. If you define the work, but the very simple is, if you applied a force on a body and body will move from one point to the another point, or body will displace from one point to the another point, suppose this displacement be s, so the work done is, you can say we are doing some work. If you are applying some force and body will displace, then we can say we are doing some work. So mathematically we can say work is a product of force into displacement. That is a very simple. Work is equals to force into displacement. The second thing is work is scalar quantity. Work is scalar quantity. The SI unit of work is Newton meter, or we are saying directly that is a joule. In short, we are represented by J. So SI unit of work is joule, and the CGS unit of work is, means Newton convert into dyne, meter into centimeter. So dyne into centimeter, we are saying arch, so represented by arch. And the one question is generate, convert, or you can say relation, or relation between joule and arch. So how we are saying about this, 1 joule, और you can say J, बुक में आपको सिर्फ J ही नोटेशन मिलेगा. So the joule J, that means 1 Newton meter. 1 Newton is 10 to the power 5 dyne, we have already studied, into meter is 100 centimeter. So 1 joule is 10 to the power 7 dyne into centimeter is called arch. So it is a relation between the joule and the arch. So in the next point is, we can apply the force in a different direction also. Suppose very simple example again, you are applying a force in this direction F, and the displacement of the body be S, right? The force applied in a particular direction of with respect to the displacement, that particular direction is theta. So in that type of force, when the force is applied in particular angle of theta, then we can say the work is F cos theta into S, means the component of force is F cos theta in the direction of displacement. Actually force is a vector quantity, and if you are applying a vector quantity in a particular direction, then every vector quantity having a two component, one is the horizontal component, second is the vertical component. This theory you will study in the higher classes. Now on that time it is required just to learn that the force in the direction of displacement is F cos theta, and W is equals to, you can say, Fs cos theta. It's a very basic and simple formula. If now 3 cases are generated due to this formula, 3 cases are generated
due to the angle theta. So many cases, but the important is 3 cases. Case 1, the thing is theta is 0. Theta is 0 means, theta means 0 means force and the displacement in the same direction. Applied the force in and the displacement both having in the same direction. जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो वेरी फर्स्ट थ्योरी है जो आपको हमने स्टार्टिंग में बताया. सो दैट इज cos 0. यू नो व्हाट अबाउट cos 0? Cos 0 is 1. So W is only is Fs. You can also say positive work. आपकी बुक में इस तरह से मेंशन है पॉजिटिव वर्क. केस सेकंड इज इफ थीटा इज 90 डिग्री, सो W इज इक्वल्स टू Fs cos 90. अगर मैं पुट करता हूं देन W इज इक्वल्स टू 0. cos 90 इज 0. दैट इज कॉल्ड जीरो वर्क. What you say about this case? Like this, if you applied the force in vertical direction and the displacement from this direction. बड़ा बेसिक एग्जांपल में देता हूँ. रेलवे स्टेशन पर कोई कुली अपने सर पर वेट रख लेता है, तो फोर्स अप्लाइड लाइक ऑन दिस हेड और वो चलता है, डिस्प्लेसमेंट उसका हॉरिजॉन्टल है. इन दिस टाइप उसका जो वर्क होगा वो क्या होता है? 0. तो वर्क कहा जाता है 0. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो वर्क. केस थर्ड, थीटा इज 180 डिग्री. कॉस 180 डिग्री अभी आप लर्न कर लीजिए, दैट इज इक्वल टू -1. हायर क्लासेस में कॉस 180 डिग्री -1 कैसे आया यू विल नो. सो W इज इक्वल्स टू -Fs. कॉस फार्मूले में पुट करें cos 180 is -1. W equals to -Fs. That means negative work. So what you think about this negative work? Means you are applied a force in this direction. Suppose in this direction, applied the force in this direction and the displacement like in this direction. So the angle is 180 degree. Force and the displacement both are in opposite direction. ऐसा कब होता है? During the friction force time. You are applying a force on earth in this direction and your movement in the forward direction. That is called the negative work. So there are the 3 types of work in your course is important: positive work, zero work, negative work. So theta is 0, theta is 90 and theta is 180 degree. So remember all these 3 things and now discuss as per the book. क्योंकि आप लोग कुछ बुक से भी कहते हैं कि सर अभी ये टॉपिक रह गया है या ये. नाउ कम टू द वेरी इनिशियल कंडीशंस. द वर्क इज गिवन. एनी एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स मस्कुलर और मेंटल एफर्ट्स, यू कैन से दैट इज अ वर्क. नॉर्मली हम ये कहते हैं, बट वी आर सेइंग द वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स इज डिफाइंड as the product of the component of force in the direction of the displacement and the magnitude of the displacement. The same diagram is again given. F cos theta, displacement is theta. ये डायरेक्ट दिया है W equals to F cos theta into S. और हमने आपको इनिशियली से बताया था कि नॉर्मली हम लोग बोलते हैं फोर्स into displacement. Now given in this section also, by mathematically we can say work equals to force into displacement of point of application of the force in the direction of force. Work is a scalar quantity, I have already told. Types of work, that is a positive work, negative work, zero work. So the positive work is at 0 degree to 90 degree. Example is already given, you can read the example. जो बेटा लर्निंग सेक्शन होता है, जो इजी होता है और लर्निंग होता है, उस पर मैं कंसंट्रेट बेसिकली करता नहीं हूँ. राइट, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको एक बार रीडिंग कर लें. जहाँ एग्जाम्पल इज वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑफ इफ ए बॉडी फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, वर्क डन बाय द हॉर्स पुलिंग अ कार्ट, वर्क डन बाय द स्ट्रेचिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्प्रिंग, वर्क डन बाय द कुली इन लिफ्टिंग अ लोड अबव हिज हेड. दैट इज अ नेगेटिव वर्क. थीटा 90 डिग्री टू 180 डिग्री के बिटवीन, और मैंने बोला 180 डिग्री पर याद रखिए बस.
डायरेक्ट आपके कोर्स में 180 के रिस्पेक्ट में. आई ऑलरेडी गिवन यू वर्क डन बाय फ्रिक्शन एग्जाम्पल. तो लर्न द एग्जाम्पल फ्रॉम योर बुक. जीरो वर्क इज थीटा इज 90 डिग्री, जो कॉस थीटा इज जीरो. वर्क डन बाय द टेंशन इज द स्ट्रिंग. पहली चीज़ मैंने आपको थर्ड एग्जाम्पल दिया था, वर्क डन बाय द कुली कैरिंग लोड इन हिज हेड, राइट. सो ऑलवेज रिमेंबर. एंड आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द यूनिट्स ऑफ वर्क, राइट. द मैथमेटिकली उन्होंने CGS सिस्टम से शुरू किया, 1 अर्ज, और यहाँ लिखा है इन SI वर्क्स इज मेजर्ड इन जूल. वर्क डन इज सेट टू बी 1 जूल इफ ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए बॉडी displaces it through 1 meter in its own direction. So that part is given. Mathematically we can say 1 joule is 1 newton into meter, right, and that is a conversion of joule into 10 to the power 7 arch. And after that work done under various situations you can read yourself. Vertical climb in a lift, ठीक है, बस इसको रीडिंग करना है आपको. क्लाइंबिंग स्टेयर्स, बस जस्ट रीड करना है. एंड नाउ योर वर्क इज completed. So always remember here it is this one is the extra section. I write down this is one of the extra section. It is not important as per your board exams. It is an extra section given from work done under various situation. So now in the next time we will discuss about the power. Thank you.